Hello everyone. So today we will study on different types of earthquake waves. So earthquake waves takes place in lithosphere. Depth of lithosphere up to 200 किलोमीटर, यानी कि लिथोस्फीयर की डेप्थ है वो 200 किलोमीटर तक की है. Seismograph records waves reaching the surface. Now there are two types of wave: body wave and surface wave. Body wave generated due to release of energy at a focus and moves in all direction. So body waves है वो सभी डायरेक्शन पे मूव करती है. When body waves interact with surface rocks and generate new set of waves called surface waves. So जब जब बॉडी वेव्स किसी रॉक पे इंटरेक्ट करती है तभी जनरेट होती है सरफेस वेव्स. मूव्स अलोंग सरफेस. वेलोसिटी चेंजेस एज मटेरियल हैव डिफरेंट डेंसिटी. वेलोसिटी भी चेंज होती है, अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा डेंसिटी है तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी. इसी प्रकार डेंसर द मटेरियल हायर द वेलोसिटी. चेंजेस डायरेक्शन एज रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट विथ डिफरेंट मटेरियल. नाउ सो फर्स्ट कम पी वेव, देन एस वेव, देन सरफेस वेव. Two types of body waves. P waves, fast and first to arrive at surface. Primary waves, similar to sound waves, travel in all states. So जो P wave है वो सभी मीडियम पे ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. S waves arrives at surface with some time. Secondary waves, they can only travel through solid material. So ये डिफरेंस है S wave और P waves में, यानी कि P waves सभी स्टेट पे मूव कर सकती है और एस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल पे. रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव टू रिबाउंड व्हेन रिफ्लेक्शन मेक्स मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. So don't forget to subscribe my channel.